guys, and a very warm welcome into today's class. Today we are going to be discussing about some of the very interesting techniques. तो आज हम बात करने जा रहे हैं मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उनकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में, और ये भी जानेंगे ये कैसे काम करता है रियल वर्ल्ड में और हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या क्या तकनीक्स हैं इसको इम्प्लीमेंट करने की यूजिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि पाइथन, जो कि मोस्ट फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फॉर इम्प्लीमेंटिंग मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशंस इन टुडेज टाइम्स। तो ये जो हम देख पा रहे हैं, दिस इज़ अ कंप्यूटर विजन मॉडल फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, एंड इस पे हम देख पा रहे हैं कि देयर इज़ अ पर्सन, देयर आर पीपल who are crossing the road and it's perfectly able to classify them. हालांकि बैग तक it can classify, we can see the backpack also being labeled from person to trucks to bicycle or bikes, motorcycles. This camera or the CCTV footage is able to classify the person, the bicycle, the motor vehicle which is in the camera frame. This is an application of computer vision which has been combined with a kind of machine learning algorithm which is able to classify and detect these objects. एंड इस टाइप की एल्गोरिदम को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। तो इसमें हम पहले ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहे हैं कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हम उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर रहे हैं, उसकी मूवमेंट को। सो दैट्स व्हाट इट गिव्स, दैट्स हाउ इट गेट्स इट्स नेम कॉल्ड ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग मॉडल। इट्स अ मॉडल व्हिच इज एबल टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ दीज व्हीकल्स, मशीन्स, person and even the bags can track. So these kind of applications, ये इस टाइप की applications बहुत यूज़फुल हो सकती हैं for public places, कि कोई लावारिस वस्तु पड़ी हो बैग या जैसे कि कुछ भी रोड के किनारे, so and भीड़ बहुत ज़्यादा हो जैसे मार्केट में, like during the Diwali times or something like that. So it becomes very difficult task for any kind of a security personnel, may it be the military or the police force, to be able to keep an account and keep an eye on everything. So that is where artificial intelligence comes into picture. It can track the movement of a bag, कि वो बैग वहाँ पे कौन छोड़ के गया है, and things like that. Instead of a police personnel or security personnel or the CCTV footage guy taking a look over all of the footage of the evening to determine whose bag it was, who was the actual person who left that bag there on the road. This can be done using this kind of object tracking model, कि वो bag actually में कौन छोड़ के गया है. Using a simple command we can ask the computer कि भाई आप निकाल के दो हमको that who left that bag on the road or somewhere or wherever, or what kind of project do we have a task, maybe identifying a person. Now that we have identified persons, we can do facial recognition model and identify if there is any terrorist kind of people, or if the database of the person, of the people walking around in the market, matches with the faces of any terrorist group or something like that, which might be some important information for the national security or even the security people, which makes our task a bit more easier. Moreover, this kind of application, इस type की चीज़ें we can use in self-driving cars, that is driverless vehicles. If these objects can be traced in
by these CCTV cameras. This can be installed in cars as well कि भाई आपने गूगल को बोला okay Google take me to Dehradun or some other place and Google takes you there. It knows how to objectify a person, what are the other vehicles on the road, and using एक type की algorithm we can find out the distance between those objects. तो हम कैमरास लगा सकते हैं गाड़ी के अराउंड एंड उन कैमरास के पीछे हम एक दिमाग डाल सकते हैं विच इज़ द एल्गोरिदम और द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ. तो एक मशीन रूपी यंत्र में दिमाग डालने की प्रक्रिया को हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो आज हम इस बारे में थोड़ा जानेंगे कि क्या है ये, हाउ डिड इट केम इनटू बीइंग, क्या क्या खोजें थी इनके पीछे एंड कैसे इस पे खोजबीन की गई और यहाँ तक हम पहुँच पाए. दैट वी आर एबल टू क्लासिफाई पीपल, ऑब्जेक्ट्स, कार्स, बाइक्स एंड हाउ कैन वी मेक यूज़ ऑफ इट, और कैसे इसका यूज़ किया जा रहा है रियल वर्ल्ड में जैसे कि हम देख पा रहे हैं. और सिर्फ गाड़ियों तक ही ये सीमित नहीं है या फिर सिर्फ कैमरास तक ही सीमित नहीं है. यहाँ पे हम उस दिमाग डालने की प्रक्रिया से हम ये भी जान सकते हैं कि हमको अब हमारे घर में किस चीज़ की ज़रूरत है. जैसे अब कोई बंदा नया फ़ोन खरीदेगा तो फ़ोन के साथ इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द गाय ऑल्सो गेट्स अ फ़ोन कवर एंड अ टेम्पर्ड screen protection which gives him an all round protection of his phone कि भाई screen व्रीन ना टूटे, the screen doesn't breaks and he doesn't has a loss from his new phone. Now same way हम एक algorithm design कर सकते हैं that people who bought this also bought this. We might have seen this upon Amazon कि आप एक product खरीदते हो तो it tells you there like right on the product page itself कि हमको देखने को मिलता है कि जिन लोगों ने ये प्रोडक्ट खरीदा उन्होंने क्या और प्रोडक्ट खरीदा. तो इस टाइप की टेक्नोलॉजीज हम यूज़ कर सकते हैं एक बेटर बिजनेस सोल्यूशंस बनाने के लिए which can be more helpful for the customers as well as the businesses themselves कि भाई there's a person calling कि I have ordered a fridge or maybe ordered another electronic item like a microwave and you suggest me which kind of bowl should I buy. Instead of कि एक बंदा वहाँ पे कॉल कर रहा हो कि भाई I have bought कि मैंने नया माइक्रोवेव ख़रीदा है, जैसे अब आप मुझे बताइए इस माइक्रोवेव के अंदर रखने के लिए मैं कौन सा लूँ. And now supposedly कि वेबसाइट पे there are 1000 people or say 10,000 people जिन्होंने वो माइक्रोवेव ख़रीदा है, जिन्होंने वो या कोई दूसरा माइक्रोवेव ख़रीदा है अमेज़ॉन से. Now imagine 10,000 people calling in at Amazon just for that कि भाई आप मुझे बताओ what kind of bowl should I buy for microwaving my food inside this electronic device. So this would be a very big hectic thing कि भाई waiting time would be more than what the query is. 10,000 people calling it at Amazon and more time of these customer care agents being consumed. A lot of time is being devoted over here. People waiting in the कि कृपया लाइन पे बने रहें, आप कतार में हैं. People holding on to that line for say 30 minutes. आपका वो टाइम बच सकता है if you can just program an algorithm which can design which is designed to recommend you products based upon the kind of products that you have bought and based upon what other customers have bought along with that kind of product. कि अगर किसी ने सैमसंग का से 10 लीटर का माइक्रोवेव ख़रीदा है तो उन्होंने साथ में क्या बाउल्स खरीदे. अगर एक ही सिंपल हम सजेशन डाल दें हमारे ई-कॉमर्स के माइक्रोवेव के डिस्क्रिप्शन पेज के साथ, सो ये 10 घंटे का वेटिंग टाइम वी कैन ईजिली रिड्यूस टू ऑलमोस्ट हाफ एन आवर and people and these our customer care agents can focus more upon
other people queries like किसी की payment fail हो रही है or something like that which requires more immediate attention, or maybe someone Amazon account got hacked, or maybe he or she had some unauthorized access to the account or something like that. That kind of more of requires an immediate attention. So आपने यहाँ पे easily अपने ऑब्जेक्टिव्स को आपने सेग्रीगेट कर दिया और आपने फोकस किया उन चीज़ों पे जो कि आपको एक्चुअली में ज़रूरत है, जहाँ पे आपको कस्टमर केयर एजेंट्स की, ना कि वो सिर्फ कॉल कर रहे हैं जानने के लिए कि मेरे को आप बताइए कौन सा बाउल ख़रीदना चाहिए, मैंने ये माइक्रोवेव ख़रीदा है। और ना सिर्फ ये प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर सकता है, ये आपको मूवीज़ भी रेकमेंड कर सकता है कि आपने अगर नेटफ्लिक्स पे अगर आपने ब्लैक मिरर देखी है तो आपको कौन सी मूवी देखनी चाहिए। अब आप अपने दोस्तों से पूछेंगे कि भाई आप बताओ भाई मैंने ये मूवी देखी है, मुझे आई लव दिस ब्लैक मिरर थिंग, नाउ यू टेल मी कि यार मैं क्या देखूं भाई, इस टाइप का ही कुछ देखना है। आई डोंट वांना see what other people are watching, I want to see according to my own personalized kind of choice. And हो सकता है like your friend might have also have seen that movie and would say, oh I have also watched that, you must watch let's say maybe some other series, maybe say Orange or something like that. I'm not the right kind of guy to maybe to recommend you, but if there is an algorithm that is designed based upon what kind of people like to watch Black Mirror, किस टाइप के लोग होते हैं जिनको Black Mirror देखना पसंद है, और उस टाइप के लोग क्या और देखना चाहते हैं या उन्होंने क्या और देखा है in their past programs, in the recent past. तो उस बिहाफ पे हम उनको भी कुछ रेकमेंड कर सकते हैं कि अगर हमको पता है कि जिसने मैट्रिक्स देखी है ही ऑल्सो वॉच्ड ब्लैक मिरर, और जिन्होंने ब्लैक मिरर देखी है एवरी वन ऑफ देम वॉच्ड ऑलमोस्ट मैट्रिक्स, सो द पीपल हु हैवंट वॉच्ड मैट्रिक्स एंड हैव वॉच्ड ब्लैक मिरर, हम उनको मैट्रिक्स रेकमेंड कर सकते हैं। ऐसे देयर कुड बी 1000 different permutations and combinations which can be created out. It's just about finding them. अब एक बंदा उसको find out करे या एक algorithm, which one would be more efficient? I leave the choice over to you. So naturally it would be more efficient if there's an algorithm जो कि वो movies recommend कर रही है to the people, rather than there's a guy sitting behind the computer 24/7 looking for people, looking over the database of the people of who watched this and then asking that if you watch this then you might want to watch. Now this algorithm can be way more efficient. We can use the age factor that between 20 to 30 years of age people like this movie, these kind of movies, and if the person is between 20 to 30 years of age, recommend him this movie. अगर वो 30 से 40 उम्र के बीच में है तो recommend कीजिए आप कुछ आध्यात्मिक टाइप की मूवी, something like that. Or if they are really elderly age, then you might have different recommendations. So designing an algorithm which could be an all-round solution for this kind of problem would be way more efficient for big tech giants that have these OTTs or streaming platforms for themselves, rather than asking for a person to sit on the back and recommend people movies. Sounds like an hectic job, doesn't it? But for an algorithm, it's just taking processing power. It's not gonna be a head of an ache or a tedious of a task to recommend people movies. It's gonna be simple, pretty simple for them to be recommending these other people the kind of movies they want to watch. तो हम इसी को कहते हैं मशीन लर्निंग। एक मशीन जो कि लर्न कर रही है आपके उन पैटर्न्स को
बेस्ड अपॉन कि आपने कौन सी मूवी देखी, आपने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा, या वो क्या था रोड पे जो चल रहा था. दैट वाज अ पर्सन. ओके, नाउ आई नो हाउ टू आइडेंटिफाई अ पर्सन. क्या उसका हाव भाव होता है, लाइक व्हाट काइंड ऑफ appearance does he carry usually. तो ये कुछ तकनीकें थी जो कि हमने जानी. मशीन लर्निंग के बारे में. हाँ, आशा करते हैं दिस वाज अ फ्रूटफुल लेक्चर फॉर यू गाइस. आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला. एंड do stay tuned for more interesting lectures on machine learning. Guys, thank you and wish you a very happy learning.